Hi, Namaste. Hello. Welcome to my YouTube channel. Here we will learn German in Hindi and English language. मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग जर्मन भाषा हिंदी और इंग्लिश भाषा में सीखेंगे। So, let's start. Today we will continue learning alphabets. आज भी हम लोग अल्फ़ाबेट सीखेंगे। There are 30 alphabets in German language. We have already learned 26 alphabets in our last lesson. Rest 4 alphabets are called umlaut. They are Und das scharfe S. जर्मन भाषा में 30 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 26 अल्फ़ाबेट हम लोग अपने लास्ट लेसन में सीख चुके हैं। बाकी बचे हुए 4 अल्फ़ाबेट को उमलाउट कहते हैं, जो कि हैं Und das scharfe S. ए, ओ, ऊ, श। Let's practice with some examples. Mädchen Mädchen. means girl with the umlaut ä. Schön Schön. means beautiful with the umlaut o. Schüler Schüler. means student with the umlaut u. Straße Straße. with the umlaut sh means road. While writing, rest 26 alphabets are similar to English alphabet, but their pronunciation are different. बचे हुए 26 अल्फ़ाबेट लिखते समय अंग्रेजी भाषा की तरह समान होते हैं, परंतु उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, जो इस प्रकार है। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू आर एस टे ऊ फाउ वे एक्स एप्सिलॉन und Z. I hope you enjoyed learning today. If you like our video, Please like and subscribe our video. Thank you. Bye. auf Wiedersehen. Tschüss.